Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is for mathematics, class 3rd, chapter 3, measuring length, lecture number 3. Topics to be covered: addition in measures of length, exercise 3B, subtraction in measures of length, exercise 3C, word problem sums, exercise 3D. Clear? Now beta, we will solve exercise 3B. कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे? एक्सरसाइज 3B. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम. ओके, पार्ट ए 87 मीटर 10 सेंटीमीटर, कॉमा 72 मीटर 11 सेंटीमीटर एंड 95 सेंटीमीटर. क्लियर बेटा? अब हमें इनको क्या करना है? प्लस करना है. हमें इनका क्या निकालना है? सम निकालना है. सम मीन्स हम इन नंबर्स को प्लस करेंगे. हेयर इन दिस गिवन नंबर्स two units are mentioned, meter and centimeter. See, 87 meter, 10 centimeter. Here, meter and centimeter is given. 72 meter, 11 centimeter. Here also meter and centimeter is given. And 95 centimeter. Here, centimeter number is given, but meter number is not given. So, इन प्लेस ऑफ मीटर के प्लेस पर हम क्या लगा देंगे? 0. क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहां पर मीटर का कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट यूनिट्स जो इस क्वेश्चन में मेंशन है, मीटर एंड सेंटीमीटर. पहले हम यूनिट लिखेंगे, फिर हम उन यूनिट्स के नीचे इन नंबर्स को लिखेंगे. क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद यूनिट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट मीटर and centimeter. मीटर और सेंटीमीटर लिखेंगे. Then we will write 87 here at meter place, 10 at centimeter place. Okay, our next number is 72 meter 11 centimeter, so we will write 72 here at meter place, 11 here at centimeter place. Okay, and before writing these numbers 72 meter and 11 centimeter, we have to put here plus sign. हमें यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है. क्लियर बेटा? Now we have to write this number 95 at which place? At centimeter place. We will write 95 here. Okay, again we have to put here plus sign. Now we will add them. Okay, अब हम इनको ऐड करेंगे. Let's start. 0 plus 1 1, 1 plus 5 6, right? 6 here. 1 plus 1 2, 2 plus 9 11, right? 1 here and carry 1 here above 7. 7 के ऊपर हम 1 carry लगा देंगे. Now 7 plus 2 9. Okay, here below 2 there is no number, there is no digit, so we will put a 0 here. Okay, 7 plus 2 9, 9 plus 0 9, 9 plus carry 1 10, right? 0 here and carry 1 here above 8. 8 के ऊपर हम 1 carry लगा देंगे. Now 8 plus 7 15. Okay, below 7 there is no digit, so we will put a 0 here. Okay, 8 plus 7 15, 15 plus 0 15 plus carry 1.
16. So we will write 16 here. Our answer is 160 meter and 16 centimeter. Understood? Clear, beta? Now, beta, in exercise 3B. Exercise 3B में beta, we will solve question number 2. Find the sum. Part B. 2 kilometer, 360 meter, comma, 4 kilometer, 270 meter and 10 kilometer 6 meter. इनको हमने क्या करना है? ऐड करना है. Clear, beta? Here in this given question, 2 units are there, kilometer and meter. So first of all, we will write these 2 units, kilometer, meter. Now we will write the given numbers below these given units. Okay, here with the kilometer, in 2 kilometer 360 meter, we will write 2 here at kilometer place and 360 at meter place. Okay, here in 4 kilometer 270 meter, we will write 4 here at kilometer place and 270 here at meter place. But before writing these numbers, we have to put a plus sign here. Okay, now we will write here 4 and here 270. Clear? Now our next number is 10 kilometer 6 meter. Before writing these numbers at their places, we have to put a plus sign here again. यहाँ हम एक और प्लस का साइन लगाएंगे. Now we will write 10 here at kilometer place and 6 here at meter place. Clear? Now we will add them. अब हम इनको प्लस करेंगे. 0 plus 0 0, 0 plus 6 6, right? 6 here. 6 plus 7 13. Here below 7 there is no digit, so we will put a 0 here. 13 plus 0 13. Write 3 here and carry 1 here above 3. 3 के ऊपर हम 1 carry लगा देंगे. 3 plus 2 5. Okay, here below 2, there is no digit, so we will put a 0 here. 5 plus 0, 5 plus carry 1, 6. Right? 6 here. Okay, now 2 plus 4, 6. 6 plus 0, 6. Right? 6 here. Okay, here no digit is given, so we will put a 0 here. Here also below this 0 there is no digit, so we will put a 0 here again. Okay, 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, right? 1 here. Now our answer is 16 kilometer 636 meter. Clear, beta? Understood? Now exercise 3B. Question number 3. Add the following. Part A 61 kilometer 755 meter plus 7 kilometer 613 meter plus 54 meter. Okay, be careful. Here in this given question, 2 units are mentioned, kilometer and meter. Okay, and here 61 kilometer 755 meter is given. पहले हम ये वाला नंबर लिखेंगे 61 kilometer 755 meter. Then we will write 7 kilometer 613 meter. But here be careful, 54 meter is given. Kilometers numbers are missing, so you have to write 0 there in place of kilometer. Kilometer के place पर आप क्या लगा दोगे? 0. Clear?
लेट्स स्टार्ट विद यूनिट्स. पहले हम यूनिट्स से स्टार्ट करते हैं. हम यूनिट्स लिखेंगे. विच टू यूनिट्स वी विल राइट? किलोमीटर एंड मीटर. व्हाई? बिकॉज इन द गिवन क्वेश्चन these two units are mentioned. Kilometer, meter. Okay, so here 61 is at kilometer place, so we will write 61 here, and 755 at meter place, so we will write 755 here at meter place. Now plus sign is there, so we will put plus here. Okay, now next number is 7 kilometer 613 meter, so we will write 7 here at kilometer place, 613 at meter place, plus again we will put plus sign here. Okay, then we have to write 54 at meter place. Clear? Now we will add them. Understood, beta? 5 plus 3, 8. 8 plus 4, 12. Write 2 here and carry 1 here above 5. 5 plus 1, 6. 6 plus 5, 11. 11 plus carry 1, 12. Write 2 here and carry 1 here above 7. 7 plus 6, 13. Here below 6 there is no digit, so we will put a 0 here. 13 plus 0, 13 plus carry 1, 14. Write 4 here and carry 1 here above 1. 1 के ऊपर हम 1 carry लगा देंगे. Okay, 1 plus 7, 8. Here below 7 there is no digit, so we will put a 0 here. 8 plus 0, 8 plus carry 1, 9. Write 9 here. Okay, now here 6, here below 6 there is no digit, so we will put 0 here. 6 plus 0, 6. Here below 0 there is no digit, we will put 0 here again. Okay, then 6 plus 0, 6. We will write 6 here. Our answer is 69 kilometer 422 meter. Understood? Now beta, in exercise 3b, we will solve question number 3. Add the following. Part B, 13 kilometer 351 meter plus 29 kilometer 617 meter plus 1 kilometer 20 meter plus 87 meter. Okay, हमने इनको क्या करना है? Add करना है. Okay, here in this given question, two units are mentioned, kilometer and meter. First of all, we will write these two units, kilometer and meter. Okay, now we have to write this 13 at kilometer place, 351 as meter place. Okay, 351 you have to write at meter place. Now we will put here plus sign. Okay, now we have to write this 29 here at kilometer place, 617 here at meter place. Okay, then we will put plus sign here again. Okay, now we will write this one here at kilometer place and 20 at meter place. Okay, then we will put plus sign here. Okay, at last we have to write this 87 here at meter place. Clear? Now we will add them. Let's start. 1 plus 7, 8. 8 plus 0, 8. Plus 7, 15. Write 5 here and carry 1 here above 5. Now we will add 5 plus 1, 6. 6 plus 2, 8. 8 plus 8, 16. Plus carry 1, 17. Write 7 here and carry 1 here above 3.
3 plus 6, 9. Okay, here below 6, there is no digit, so we will put a 0 here. 9 plus 0, 9. Here below 0, there is no digit, so we will put a 0 here again. 9 plus 0, 9. Okay, 9 plus carry 1, 10, right? 0 here and carry 1 here above 3. Okay, 3 plus 9, 12. 12 plus 1, 13. Here below 1 there is no digit, so we will put a 0 here. 13 plus 0, 13 plus carry 1, 14, right? 4 here and carry 1 here above 1. Okay, 1 plus 2, 3. Here below 2 there is no digit, so we will put a 0 here. 3 plus 0, 3. Here below 0 there is no digit, so we will put a 0 here. 3 plus 0, 3 plus carry 1, 4. Right? 4 here. Now our answer is 44 kilometer 75 meter. Understood? Clear, beta? Now beta, we will solve exercise 3C. अब हम exercise 3C solve करेंगे. Question number 2. Find the difference between. Difference means हमें minus करना है. Clear beta? Part A 75 kilometer, 215 meter and 26 kilometer, 378 meter. हमें इसमें इसको क्या करना है, हमें इनका क्या निकालना है, डिफरेंस मीन्स हमें इनको माइनस करना है. ओके बेटा, सो बेटा हियर यू हैव टू चेक, आपको ये चेक करना है कि किलोमीटर का जो बड़ा नंबर है ना, आपको उसकी पूरी लाइन को पहले लिखना है. यू हैव टू चेक ओनली किलोमीटर नंबर. ओके, सी हियर in 75 kilometer 215 meter, kilometer number is 75, and here in 26 kilometer 378 meter, kilometer given number is 26. So which number is greater? 75 kilometer. तो हम इसकी पूरी लाइन को ऊपर लिखेंगे, पहले लिखेंगे और उसके नीचे देन वी विल राइट 26 किलोमीटर 378 मीटर. देन वी विल सब्ट्रैक्ट. अंडरस्टूड? बी केयरफुल अबाउट दैट कि बेटा आपका जो माइनस का इसमें आपको माइनस करना है सब में, तो आपको अगर किलोमीटर मीटर दो यूनिट दिए हुए हैं, यू हैव टू चेक किलोमीटर नंबर्स फर्स्ट. किलोमीटर के नंबर को पहले आपने देखना है कि दोनों किलोमीटर के नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है किलोमीटर का, उसको आप उस पूरी लाइन को आप पहले लिखोगे. अंडरस्टूड? नाउ वी हैव टू राइट यूनिट फर्स्ट किलोमीटर मीटर. नाउ हियर वी विल राइट 75. हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 75 at kilometer place and 215 at meter place. Now here we will put minus sign. Then below 75 here we will write 26 at kilometer place and 378 at meter place. Now we will subtract them. Okay, let's start. Beta here 5 is written and here 8 is written. We can't subtract 8 from 5 क्योंकि 5 छोटा है और 8 बड़ा है. अब ये 5 क्या करेगा, it will take borrow from this number that is 1. इससे ये क्या लेगा, 1 बोरो लेगा. अब ये 1 जब अपना 1 5 को दे देगा then it will become 0. ये 0 बन जाएगा and this 5 will become 50. Understood? Clear beta? Now we can easily subtract this 8 from 15. 15 minus 8, 7. Right? 7 here. Now here 0 is there and here 7 is there. We can't subtract 7 from this 0. So this 0 will take
1 borrow from this 2 given number 2, इससे 1 लेगा, it will be, ये 2 क्या है 1 बन जाएगा and this 0 will become 10. See, clear beta? Now you can easily subtract this 7 from 10. 10 minus 7 3, write 3 here. Okay, now beta we have to subtract this 3 from 1. Here 1 is written, here 3 is written. We can't subtract 3 from 1 क्योंकि 1 छोटा है और 3 बड़ा है. Then this 1 will take 1 borrow from this number 5. इस 5 से 1 borrow लेगा, then it will become 4 and this 1 will become 11. See, clear? Now we can easily subtract this 3 from 11. 11 minus 3, 8. Write 8 here. Now here 4 is written and here 6 is written. We can't subtract 6 from 4 क्योंकि 4 छोटा है और 6 बड़ा है. Then this 4 will take 1 borrow from this given number 7. अब ये 7 क्या बन जाएगा 6. Okay, and this 4 will become 14. See, clear? Now we can easily subtract 6 from 14. 14 minus 6, 8. We will write 8 here. And here we can easily subtract 2 from 6. 6 minus 2, 4. Write 4 here. Our answer is 48 kilometer, 837 meter. Understood? समझ आ गई ना बेटा आपको? Now, in exercise 3C, question number 3, subtract the following. Part A, 74 kilometer, 10 meter from 97 kilometer, 80 meter. बेटा पार्ट ए में आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट मींस माइनस करना है. इन द प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने माइनस किया था फाइंड द डिफरेंस में. इन दैट क्वेश्चन एंड वाज रिटन हियर. यहाँ फ्रॉम की जगह वहां क्या लिखा था? एंड. हियर फ्रॉम इज रिटन. फ्रॉम मीन्स में से. मीन्स हमें इस क्वेश्चन में, इस पार्ट ए में जो फ्रॉम के बाद वाली पूरी लाइन है ना, दैट इज 97 किलोमीटर 80 मीटर, ये पहले लिखनी है और उसके नीचे देन वी विल राइट 74 किलोमीटर 10 मीटर. फिर हम उनको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. अंडरस्टूड बेटा? हमें फ्रॉम के बाद वाली लाइन पूरी 97 किलोमीटर 80 मीटर पहले लिखनी है. ओके, लेट्स स्टार्ट. पहले हम क्या लिखेंगे? यूनिट्स. विच 2 यूनिट्स वी विल राइट हियर? किलोमीटर मीटर. किलोमीटर मीटर. क्लियर? नाउ वी विल राइट. अब हम क्या लिखेंगे? this 97 at kilometer place and 80 at meter place. 70, then we will put minus sign here. Okay, then 74 we will write at kilometer place and 10 at meter place. Understood? Clear beta? Now we will subtract them. 0 minus 0, 0. Write 0 here. 8 minus 1, 7. Write 7 here. 7 minus 4, 3. Write 3 here. 9 minus 7, 2. Write 2 here. Our answer is 23 kilometer 70 meter. Understood? Now beta, exercise 3D. Question number 1. Sundar painted 25 meter 80 centimeter of the fence before lunch break and 8 meter 28 centimeter after lunch. How many fence did he paint altogether? Okay, बेटा
Sundar is the name of a painter और बॉय. ठीक है. उसने एक फेंस होता है चार दीवारी. ओके. उसने पेंट की 25 मीटर 80 सेंटीमीटर लंच ब्रेक से पहले और 8 मीटर 28 सेंटीमीटर लंच के बाद. तो आपको ये बताना है कि उसने टोटल या ऑल टुगेदर इकट्ठा मतलब उसने कितनी चार दीवारी पेंट की. सो व्हाट विल वी डू हियर? वी विल डू एडिशन हियर. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल we will write units: meter, centimeter. Okay. So we will write 25 here at meter place, 80 at centimeter place, and here then we will write 8 here at meter place. Okay. And 28 here at centimeter place. Now we will add them. अब हम इनको प्लस कर देंगे. Clear beta? 0 plus 8. 8, write 8 here. 8 plus 2, 10. Write 0 here and carry 1 here above 5. 5 plus 8, 13. 13 plus carry 1, 14. Write 4 here and carry 1 here above 2. Okay, now here 2 is written. Below 2 there is no digit, so we will put a 0 here. 2 plus 0, 2. Plus carry 1, 3. Write 3 here. Our answer is 34 meter 8 centimeter. Understood? Now beta, in exercise 3D we will solve question number 2. A roll of rope contains 86 meter 35 centimeter length if 37 meter 72 centimeter of the rope used, then what length of the rope is left behind. Understood? बेटा एक रोल है किसका? रस्सी का. उसकी टोटल लेंथ कितनी है? 86 मीटर 35 सेंटीमीटर. और उस रोप में से 37 मीटर 72 सेंटीमीटर जो रस्सी है ना वो यूज्ड हो गई. आपने यूज कर ली तो आपको ये बताना है कि अब उस रोल में कितनी रस्सी बच गई. देन व्हाट विल वी डू हियर? हम यहां पर क्या करेंगे? हम यहां पर माइनस करेंगे. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट यूनिट्स हियर. मीटर, सेंटीमीटर. ओके. हम यहां पर यूनिट लिखेंगे मीटर और सेंटीमीटर. ओके बेटा. नाउ हियर वी विल राइट, यहां पर मीटर के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? 86 मीटर 35 सेंटीमीटर. एंड हियर we will put a minus sign. Then we will write here 37 at meter place and 72 at centimeter place. Now we will subtract them. अब हम इनको माइनस करेंगे. ओके बेटा. 5 minus 2, 3. We will write 3 here. Here 3 is written and here 7 is written. We can't subtract 7 from 3 क्योंकि 3 छोटा है और 7 बड़ा है. तो ये 3 क्या करेगा? Then it will take 1 borrow from this given number 6. ये इससे 1 borrow लेगा. This 6 will become 5 and this 3 will become 13. Understood beta? Now we can easily subtract this 7 from 13. 13 minus 7, 6. We will write 6 here. Okay. Now we have to subtract this 7 from 5. But we can't subtract 7 from 5 क्योंकि 5 छोटा है और 7 बड़ा है. Then this 5 will take 1 borrow from this given number 8. जब 8 अपना 1 5 को देगा then it will become 15 and this 8 will become 7. See? Clear? Now we can easily subtract this 7 from 15.
Okay, 15 minus 7, 8. We will write 8 here. Now, 7 minus 3, 4. Write 4 here. Our answer is 48 meter 63 centimeter. कितनी रस्सी हमारी बच गई बेटा? उस रस्सी की लेंथ कितनी है जो बच गई? दैट इज 48 मीटर 63 centimeter. Understood? So the length of the rope is left behind 48 meter 63 centimeter. Now beta, today's homework. Do exercise 3C, question 3. Subtract the following parts B and C. Part B, 48 meter 52 centimeter from 71 meter 49 centimeter. Part C, 100 kilometer from 200 kilometer 500 meter. Be careful while doing this part C. ठीक है, आपको फ्रॉम के बाद वाला नंबर पूरी लाइन पहले लिखनी है, 200 kilometer 500 meter. But here beta, kilometer number is given but meter number is not given. So at meter place you have to put 3 zeros. Why? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1000 में 3 जीरोस होती हैं, तो मुझे मीटर के प्लेस पर कितनी जीरोस चाहिए? 3. तो यहां पर आप किलोमीटर के साथ मीटर के प्लेस पर 3 जीरोस लगाओगे. क्लियर? And you have to do homework carefully. Now beta, we will discuss homework solutions which I had assigned in the previous lecture. Let's start. Exercise 3B, question number 1. Add parts E to L. Understood? Now, question 1, add part E. In part E, given numbers are 252 kilometer, 110 meters, plus 108 kilometer, 416 meter. इसमें आपको क्या करना था होमवर्क में? Add. And these sums are given in your book. आपको ये होमवर्क बुक में ही करना था. Okay, as space was provided in your book. Clear beta? Let's start. 0 plus 6, 6. We will write 6 here. 1 plus 1, 2. We will write 2 here. 1 plus 4, 5. We will write 5 here. Now we will add this 2 and 8. 2 plus 8, 10. Write 0 here. Carry 1 here above 5. Okay. 5 plus 0. 5. Okay, then plus carry 1. 6, right? 6 here. Okay, then 2 plus 1, 3. We will write 3 here. Our answer is 360 kilometer, 526 meter. Have you cross-checked beta? Very good. Now we will discuss part F. In part F, given numbers are 173 kilometer, 622 meter, 83 plus 83 kilometer, 900 meters. Now we will add them. Okay, you have already added as I had assigned this work in homework. Now you have to cross check. Okay, 2 plus 0, 2. Write 2 here. 2 plus 0, 2. Write 2 here. 6 plus 9, 15. Write 5 here and carry 1 here above 3. 3 plus 3, 6 plus carry 1, 7. Write 7 here.
Okay, now 7 plus 8, 15. Write 5 here and carry 1 here above 1. 1 plus 0, 1 plus carry 1, 2. Write 2 here. Our answer is 257 kilometer, 522 meter. Understood? Clear, beta? Very good. Now, beta, in homework solutions, we will discuss part G. Here in part G, given question is 525 kilometer, 118 meter plus 442 kilometer, 771 मीटर. हमने इसको क्या करना था बुक में ऐड करना था. Okay, 8 plus 1 9, write 9 here. 1 plus 7 8, हम यहाँ पर 8 लिखेंगे. 1 plus 7 8, we will write 8 here. Okay, now we have to add 5 and 2. 5 plus 2, 7. Write 7 here. 2 plus 4, 6. We will write 6 here. 5 plus 4, 9. Write 9 here. Our answer is 967 kilometer, 889 meter. Okay, now we will solve part H. In part H, given numbers are 408 kilometer, 63 meter plus 111 kilometer, 11 meters. Okay, now we will add them. 3 plus 1, 4, write 4 here. 6 plus 1, 7, write 7 here. 0 plus 0, 0, we will write 0 here. 8 plus 1, 9, हम यहाँ पर 9 लिखेंगे. 0 plus 1, 1, we will write 1 here. 4 plus 1, 5, we will write 5 here. Our answer is 519 kilometer or 74 meter. Clear? Now, in homework solutions, we will discuss part I. In part I, given numbers are 750 kilometer, 802 meters, plus 199 kilometers, 8 meters. Let's start addition. 2 plus 8, 0, write 0 here and carry 1 here above 0. 0 plus 0, 0 plus 1, 1, write 1 here. 8 plus 0, 8, we will write 8 here. 0 plus 9, 9, हम यहाँ पर 9 लिखेंगे. 5 plus 9, 14, we will write 4 here and carry 1 here above 7. 7 plus 1, 8, 8 plus 1, 9. We will write 9 here. Our answer is 949 kilometer, 810 meter. Clear? Have you cross-checked? Now we will solve part J. In part J, given numbers are 524 kilometer, 468 meter, plus 205 kilometer, 312 meter. Now we will add them. 8 plus 2, 10, write 0 here, carry 1 here above 6. 6 plus 1, 7, 7 plus carry 1, 8. We will write 8 here. Okay, now we will add 4 and 3. 4 plus 3, 7, write 7 here. Now 4 plus 5, 9. हम यहाँ पर 9 लिखेंगे. 2 plus 0, 2. We will write 2 here. 5 plus 2, 7. We will write 7 here. Our answer is 729 kilometer, 780 meter. Okay. Now, beta, have you cross-checked part I and now, beta, in homework solutions, we will discuss part K. Okay, in part K, given numbers are 418 kilometer, 516 meter, plus 202 kilometer, 275 meter. Okay,
Let's start. 6 plus 5, 11. Write 1 here and carry 1 here above 1. 1 plus 7, 8 plus carry 1, 9. We will write 9 here. 5 plus 2, 7. हम यहाँ पर 7 लिख देंगे. Now 8 plus 2, 10. Write 0 here and carry 1 here above 1. 1 plus 0, 1. 1 plus carry 1, 2. We will write 2 here. Okay. 4 plus 2, 6. We will write 6 here. Answer is 620 kilometer, 791 meter. Now we will solve part L. In part L, given numbers are 123 kilometer, 423 meter, plus 111 kilometer, 44 meter. 3 plus 4, 7. We will write 7 here. 2 plus 4, 6. We will write 6 here. 4 plus 0, 4. We will write 4 here. 3 plus 1, 4. हम यहाँ पर 4 लिख देंगे. 2 plus 1, 3. We will write 3 here. 1 plus 1, 2. हम यहाँ पर 2 लिख देंगे. Our answer is 234 kilometer, 467 meter. Clear? Have you cross-checked, beta? Thank you.